मुझे बुलडोज़र राज का इशू दिया था और उसमें मैं दो चीज़ बोलना चाहूँगा। सबसे पहले हल्द्वानी का डेमोलिशन के बारे में बोलना चाहूँगा संक्षिप्त में। उसके बाद मैं दिल्ली के बारे में बोलना चाहूँगा। हालांकि उसमें मुसलमान का पर्टिकुलर प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हल्द्वानी में 50,000 लोग रहता है, ऑलमोस्ट ऑल मुस्लिम्स, और वहाँ पे नोटिस दिया गया कि आपको यहाँ से हट जाओ। बहाना क्या थी? बहाना ये है कि हल्द्वानी जंक्शन को आधुनिकीकरण करना है। और जो उत्तराखंड के लोग गए, आपको मालूम है कि हल्द्वानी ये स्लीपी स्टेशन है, उसमें एकदम कोई ट्रैफिक ही नहीं है, 3-4 गाड़ियाँ आती है दिन में वगैरह। उसको पूरा ज़मीन कब्ज़ा करने का था। हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, और इस पर सोचने की बात है कि हमारा जुडिशरी का क्या हो गया। डेमोलिश, रिमूव करो, और करते समय पैरामिलिट्री फोर्सेस का उपयोग करो। पैरामिलिट्री फोर्सेस इन डेमोक्रेटिक इंडिया टू रिमूव पुअर पीपल। तो जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो इत्तेफाक से कुछ अच्छे जजेस के सामने आ गया, बाय लक, क्योंकि एटीट्यूड, जुडिशरी का एटीट्यूड झुग्गी झोपड़ी वालों के बारे में बहुत ही घटिया है। बाय लक इट केम बिफोर गुड जजेस एंड द जज आस्क्ड कि डेमोक्रेटिक इंडिया में कौन ऐसा ऑर्डर पास करता है कि टेक आउट पैरामिलिट्री फोर्सेस टू विक्टिम। तो स्टे ऑर्डर मिले, दैट इज गोइंग ऑन। बट द एटीट्यूड ऑफ जजेस इन आवर कंट्री वेरी बैड। हाई कोर्ट में जाओगे, दे विल ऑल से यू आर इंक्रोचर, यू आर इंक्रोचर, यू आर इंक्रोचर। 50 साल से है उसी जगह पर, 50 साल से है, यू आर इंक्रोचर। कोलकाता का एक उदाहरण मैं दे दूंगा, दलित बस्ती का। हाई कोर्ट में गया मैं, हार गया, सुप्रीम कोर्ट में आया। एक वेस्ट बंगाल का जज थी वो, एंड शी टोल्ड मी, पेपर इन हैंड, रेडी टू डिसमिस, कॉलिन, you don't know this area in Kolkata like I do. Dalit basti, huh? This is a den of thieves. The attitude of judiciary very bad. And why I say this, we must think of आगे क्या करना है। दिल्ली के बारे में मैं बताना चाहूँगा। दिल्ली, when Aam Aadmi Party came to power, we drafted the best policy, rehabilitation policy in India. No demolition, नो एविक्शन। अगर खास ज़रूरी है तो आपको शिफ्ट किया जाएगा ऑल्टरनेटिव लैंड, विद इन 5 किलोमीटर्स यू विल गेट। उस वक्त ऐसा था, एनी डेमोलिशन, पार्लियामेंट मेंबर वुड कम, एमएलए वुड कम, एक्टिविस्ट वुड कम। टुमारो यू गो एनी डेमोलिशन, नोबडी इज देयर, नो एमएलए, नो एमपी, नोबडी, ऑल गॉन। इलेक्शंस आर कमिंग. But when I see this, I think, you want to win the election or you want to lose the election? So demolition, dadagiri is across all parties. Jao, thodo, we are not interested. We have won the election, now we are not interested. What is to be done? Remember Dhaka. The public have to learn to take the law into their own hands peacefully. Peaceful, direct action. Don't think तुम कोर्ट में जाओगे तो ये हो जाएगा, you go to your MP, ये कुछ करेगा, MLA के पास जाओगे कुछ करेगा। Don't think. पूरा सिस्टम हमारा इंडिया में कोलैप्स हो गया। एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन, एंटी दलित, एंटी पुअर। We have to remember from our Bangladesh comrades and friends, we have to come on the streets in large numbers. It is not illegal to do peaceful direct action, non-violent direct action like Dhaka. And last udaharan, Kolkata doctors. Fantastic. Direct action, doctors, कोलकाता के करप्शन सिस्टम, इतना परेशान हो गया लोग, इतना फेडअप हो गया सरकार से। करप्शन इन द हेल्थ सिस्टम, दे आर नॉट बिलीविंग एनीबडी, दे आर नॉट गोइंग टू द कोर्ट, दे हैव नो बिलीफ। करे क्या?
So they are struggling and they are fighting. Jeetega shayad, harega shayad. We don't know. And the Chief Justice has told them, you go back or else. To वापस जाओ or else. So, with that I will end. Thank you very much.